destroyed but can never be defeated unless he accepts his defeat. वो हारता तब है जब वो अपनी हार को मान लेता है. So hello and welcome to our special podcast series brought to you by Ambedker DSU Shakarpur Campus 1 under the Aegis of G20 Summit. I am your host Ankit, a second year undergrad student and the campus president. On the behalf of my college, I am gratified to welcome you all onto our podcast. And today's topic is I win yourself to win the world. Today we have a very special guest with us, Mrs Sadhana, member of Textbook Development Committee NCERT Class 10th, Art of Living faculty and a national level table tennis player. Mrs Agarwal has an undying faith in God, which is her strength, and her commitment is to reach out as many young aspirants as possible to help and motivate them in life. She believes that by serving others, we can find a purpose of our own lives, and through her motivational videos, she aims to serve as food for the soul. Her favorite lines, a man can be destroyed but never be defeated unless he accepts his defeat, inspire her and many individuals like us to keep fighting and never give up back in life. We are excited to have you, ma'am, on our podcast today to share your insights and experiences on how to win yourself to win the world. Thank you. My first question to you, ma'am, is that what inspired you to focus on personal development and how has it impacted your life and career? See, when I was just 18 years old, I lost my father. And that was the time when I found that there is all negativity and what is life? I got the meaning of life. And I was totally in dark. There was all. And I felt myself that there's nothing to live and all. Because my father was my everything. But later on, after 2 months, I went into meditation. I went into inside. And then I realized that life is nothing. I must come out of this darkness and I must fight against this system and this negativity which is happening to me. So from there my journey started. I developed a positivity in my mind, and since I was the eldest one in my family, so then मैंने struggle शुरू किया, बच्चों को पढ़ाना शुरू किया. I'm a self-made person. My younger brother was just 10 years old. My sister was in class 8. They were my big challenges. तो मुझे लगा कि पर्सनैलिटी को डेवलप करने के लिए, अपने आप को निखार लाने के लिए, आई मस्ट सरेंडर टू द डिवाइन. तो बस फ्रॉम दैट डे आई सरेंडर टू डिवाइन. और मैंने उस ईश्वर की कृपा को, मतलब उसके फेथ को अपने अंदर रखा और अपनी जर्नी स्टार्ट की. और टुडे आई एम बिफोर यू एंड आई एम मोटिवेटिंग द स्टूडेंट्स. मुझे लगता है कि दैट इज द टाइम. अगर उस समय इन 18 years ऑफ द एज, इफ यू गेट ए पर्सन, समवन हु गाइड्स यू, जो आपको रास्ता दिखा दे, जो आपके अंदर स्ट्रेंथ पैदा करे, तो यू कैन क्रिएट मिरेकल्स इन लाइफ. So that was my first thought, and after that today I am self-made and I am all self-dependent. So I am trying my best to motivate the people, especially the students, to do something that nothing stops you, nothing can stop you in your life. Big challenge, life is a challenge and you should face it, and you can do it with your positivity. So starting with this very powerful and motivating words, thank you so much, ma'am, for this. How can individuals cultivate a positive mindset and develop greater resilience, especially when facing adversity or setbacks? Question, and very good question you have asked. Generally, whenever any problem comes into our life and we find ourselves what to do, how to do, life has come to an end. We surrender to the adversities of the life. हम उन प्रॉब्लम्स में अपने आप को खत्म कर देते हैं. हमें समझ में नहीं आता क्या करना चाहिए. बट दैट इज द टाइम वी शुड रियलाइज अवर पोटेंशियल. और वही वो टाइम होता है कि जब हम अपने अंदर की ताकत को महसूस कर सकें. एंड दैट इज द मोमेंट वेन एवर एनी पॉसिबिलिटी, एनी प्रॉब्लम्स कम इन टू योर लाइफ, वी मस्ट फेस देम, वी मस्ट टेक देम एज अ चैलेंज. और अगर हम उनको फेस कर सकते हैं, देखिए बहुत सारी परेशानियां होती हैं लाइफ में, बिना कहे आती हैं. परेशानियां कभी भी किसी को कहकर नहीं आती है ना. बट वी मस्ट बी रेडी फॉर दैट. Because anytime anything can take place. Corona came, and it brought so many disturbance in many lives. But we fought against it, and today we all are standing. So students, my dear students, whenever you have such kind of problems in your life, such kind of adversities, any kind of problem comes, face it. Face it boldly. Never surrender to the problems. Because problems always make you. They never break you.
If you surrender to them, they will break you. तो अपने अंदर ऐसी ताकत को पैदा करो कि नहीं, if you are big or problems are big, you are bigger than the problems. Okay? तो हम उनसे लड़ सकते हैं और ताकत अपने अंदर खुद पैदा करनी पड़ती है. We should develop the inner strength to fight against all odds in life. We can do it. तो पॉजिटिव हमें अपने माइंड से चलना पड़ेगा और एक चीज अपने माइंड में रखनी चाहिए, ऑल इज गुड फॉर द बेस्ट. जो कुछ भी हो रहा है शायद मेरे अच्छे के लिए हो रहा है. अब कोई बोलेगा कि इसमें क्या अच्छा ही है, लेकिन पॉजिटिविटी इज देयर. आपके अंदर के टैलेंट बाहर आता है और आप उसे लड़ सकते हो यदि आपके अंदर उतनी हिम्मत है और ताकत है. सरेंडर कर दोगे तो जिंदगी खत्म है. तो व्हाट डू यू वांट? यू आस्क योरसेल्फ, व्हाट डू यू वांट? You want to fight, you want to live, you want to surrender. So positive mind से आप बहुत आगे पहुंच सकते हैं. You have to win the world, you have to do many things. Yes or no? Yes, sir. We must be positive and we must not surrender to anything. You have just quoted my favorite lines. A man can be destroyed but can never be defeated unless he accepts his defeat. वो हारता तब है जब वो अपनी हार को मान लेता है. हार नहीं माननी चाहिए. थोड़े टाइम के लिए, हर दिन बदल रहा है, एवरीथिंग इज चेंजिंग, दिस पीरियड, दिस टाइम विल आल्सो चेंज. बस इससे अपने मन को आगे आपको ले जाना होता है. एंड यू कैन डू इट, एवरीबॉडी कैन डू इट. तभी शायद हम अपने पेरेंट्स से भी सुनते आते हैं कि हमें कभी जिंदगी में कभी हार नहीं माननी चाहिए. नेवर गिव अप, नेवर गिव अप इन लाइफ. ऑलवेज फाइट, ऑलवेज फाइट, नेवर गिव अप. देयर आर सो मेनी थिंग्स व्हिच विल ऑलवेज मेक यू वीक. दुनिया खड़ी है आपको कमजोर करने के लिए, आपको नीचा दिखाने के लिए. देयर आर सो मेनी प्रॉब्लम्स, नॉट ओनली देयर आर फिजिकल प्रॉब्लम, देयर आर इमोशनल इम्बैलेंस, देयर आर सो मेनी सेटबैक्स इन द लाइफ. कभी कभी रिलेशनशिप में भी आ जाता है, फैमिली में भी आ जाता है. देयर आर सो मेनी ब्रेकअप, सो मेनी प्रॉब्लम्स, बट वी मस्ट ऑलवेज बी रेडी टू फेस देम एंड टेकिंग देम एज अ बिग चैलेंज. To you, ma'am, is related to the college students' life basically. That how can college students balance their academic responsibilities with their personal goals and passions? Really, this is a big problem, big challenge for the students. कि जो personal problems हैं और जो career goals हैं, उनके बीच में balance कैसे बनना है? How to make the balance between these two? So, see, whenever we are doing, जब हम साइकिल चलाते हैं, पैडलिंग करते हैं, तो क्या होता है? अगर हम बैलेंस करना पड़ता है ना, क्योंकि बैलेंस एक नीचे एक ऊपर होता है, और बैलेंस करते तो वो रुक जाती है. सिमिलरली इन आवर लाइफ वी शुड सी कि जब हमारा कैरियर है, इफ वी वांट टू डू समथिंग, फोकस होकर हमें काम करना है. इफ वी फोकस ऑन आवर गोल, दैट टाइम वी शुड कीप अवे आवर पर्सनल प्रॉब्लम्स. अगर हम पर्सनल प्रॉब्लम्स को हमेशा अपने साथ रखेंगे, याद करते चलेंगे, तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे. तो थोड़ा सा डिस्टेंस बनाना पड़ेगा, बैलेंस बनाना पड़ेगा. और दे बोथ आर इम्पॉर्टेंट इन आवर लाइफ. हमारे कैरियर भी ज़रूरी है, हमारी पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी ज़रूरी हैं जो हमें निभानी है, विच वी हैव टू टेक केयर. वी कैन डू इट बाय मेकिंग द बैलेंस एंड बाय मेकिंग द टाइम मैनेजमेंट. हाउ कैन वी डू इट? बिकॉज वी हैव टू डू इट. हम किसी चीज़ को पीछे नहीं छोड़ सकते. कैन वी लीव देम बिहाइंड? No, ma'am. वी हैव टू कैरी ईच एंड एवरीथिंग एंड वी कैन डू इट. स्टूडेंट्स के अंदर बहुत ताकत होती है. दे आर मोस्ट पावरफुल, दे आर द मोस्ट टैलेंटेड वन, दे कैन डू इट. बट इफ दे वांट टू, द मैनी स्टूडेंट्स हु सरेंडर, वो कहते हैं नहीं होगा और एक चीज को छोड़ देते हैं, दूसरी चीज को पकड़ लेते हैं. सो नो, इट शुड नॉट, दे शुड नॉट डू इट. दे मस्ट अंडरस्टैंड दे कैन डू इट एंड दे मस्ट कंटिन्यू with their own pattern, with their own thinking, with their own talent and with their own mindset. अपने माइंडसेट को कहीं जरूरत है तो उसको बदलना भी पड़ेगा और बदलना चाहिए. रिजल्ट्स विल बी बेटर. मेरा अगला क्वेश्चन आपसे ये है कि आपने एक बहुत ही अर्ली स्टेज पे अपने पेरेंट्स को खो दिया, जो कि हम कह सकते हैं कि हमारे सबसे बड़े मोटिवेटर हमारे पेरेंट्स होते हैं. Oh, yes. तो मैम एक इतनी अर्ली स्टेज पे अपने पिता का साया साल से उठ जाने के बाद आपका मैम एक मोटिवेशन फैक्टर क्या रहा जीवन में कुछ करने का? माय गॉड, मोटिवेशन फैक्टर यही रहा कि जो मैंने खोया और उसके बाद जो मैंने पाया, तो अगर ऐसा कुछ किसी और के साथ कभी लाइफ में होता है तो वो अपने आप को कमजोर ना महसूस करे. उसको ये लगना चाहिए कि कोई भी परेशानी अगर आपके जीवन में आती है, एनी प्रॉब्लम कम्स इनटू योर लाइफ, हाउ टू फेस इट, हाउ टू
मेक योर सेल्फ बेटर पर्सन, हाउ टू मेक योर सेल्फ स्ट्रॉन्ग, राइट? क्योंकि आप उस समय बहुत तन्हा, बहुत अकेला महसूस करते हैं। और जब एक फादर मीन्स ही वॉज माई फ्रेंड, ही वॉज माई एवरीथिंग इन लाइफ। कोई भी आपका प्यारा आपके घर में आपके पास है और आपको लगता है कुछ भी नहीं है लाइफ में, कुछ भी नहीं बचा है, ऐसा आप सबके साथ होता है, बहुत लोगों के साथ होता है। बहुत लोगों को लगता है कि कई बार वो ऐसे एक वर्ड्स पे आ जाते हैं लाइफ के कि जहाँ से कुछ दिखाई नहीं देता है ना। बहुत सारे स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है, सपोज दे वांट टू अचीव टू सम गोल, अब वो उनको गोल नहीं मिल पाता, वो कुछ करना चाहते हैं लाइफ में, नहीं कर पाते हैं किसी भी वजह से, फॉर एनी रीजन दे कुड नॉट रीच टू देयर गोल्स एंड ऑल, उनको लगता है बहुत डिफिकल्ट है, तो वो बीच में छोड़ देते हैं। तो नो, दे शुड नॉट। तो सिर्फ मुझे यही लगा कि आप अगर अपनी इनर स्ट्रेंथ वर्क्स वेरी वेल, आपको अपने अंदर की शक्तियों को जगाना है, एंड दैट यू मस्ट डू, फोकस ऑन योर इनर स्ट्रेंथ, और अपने साथ एक विश्वास को जरूर पैदा करें। फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड बिलीव इन योर सेल्फ, आई कैन डू इट, दैट इज, अपने अंदर विश्वास पैदा करें। और फिर देखिए प्रकृति है तो नेचर है, एंड द गॉड वट एवर पावर यू बिलीव इन, दैट ऑल्सो कम्स विद यू। और जब वो दोनों चीजें मिल जाती है ना, तो यू बिकम मोस्ट पावरफुल पर्सन, एंड देन यू कैन क्रिएट वंडर्स इन योर लाइफ। बिकॉज आपको अपने लिए भी करना है, बट दुनिया के लिए भी तो बहुत कुछ करना है। यंग जनरेशन, दे हैव टू डू ग्रेट इन द वर्ल्ड। यस मैम, कहीं ना कहीं अपने शाहरुख खान साहब की मैम 2 लाइनें याद आ रही है, उनकी मूवी काफ़ी फेमस लाइनें हैं वो, कि अगर हम किसी चीज़ को बहुत शिद्दत से चाहते हैं तो पूरी कायनात उसे मिलाने में जुट जाती है। बिल्कुल सही बात है। दिस इज ए वेरी रियल फैक्ट, ये होता है ऐसा। सारी कॉस्मिक एनर्जी है सारी, बिकॉज एक पॉजिटिविटी देयर। आई विल कोट हियर द सीक्रेट, एक बुक भी है और एक डॉक्यूमेंट्री भी है, तो जितने भी यंगस्टर्स हैं उसको जरूर देखें। दैट इज अबाउट फेथ। हम अगर किसी चीज़ पर विश्वास करते हैं और पॉजिटिविटी के साथ उसके आगे चलते हैं तो वो काम जरूर होता है। माइंड में एक विकल्प होता है, एक संकल्प होता है, तो हमें विकल्प पे नहीं पड़ना चाहिए, डाउट नहीं आना चाहिए ये होगा या नहीं होगा। नो, ये होगा। इफ यू आर पॉजिटिव देन डेफिनेटली इट विल हैपन। पॉजिटिविटी पहले अपने माइंड में रखना चाहिए, अपने दिल में रखना चाहिए, और फिर हम अगर उसी पॉजिटिविटी के साथ, उसी विश्वास के साथ आगे बढ़ते हैं, nobody can stop you. The all universe come together to help you, to motivate you, to show you the light and the way. मैम, आपने पॉजिटिविटी की बात की मैम। इन टुडेज लाइफ मैम, कॉलेज स्टूडेंट्स आर फेसिंग अ लॉट ऑफ नेगेटिविटी these days. There are a lot of negative people also around. There are a lot of negative students, and there are a lot of negative, basically teammates and friends also. That creates a kind of negative impact in their life. So how can they deal with that? Yes. If क्या कहेंगे लोग, सबसे बुरा रो। अगर मैं, if I'm always thinking what will they say about me, what are they thinking about me, सबसे पहले first of all see who has time to think about you. Everybody is busy in their own thinking. लेकिन हम क्या सोचते हैं कि वो हमारे बारे में क्या सोच रहा होगा, what he will be thinking, what is he saying. तो नेगेटिविटी अराउंड मी, नंबर वन, आप इफ यू आर पॉजिटिव एंड इफ द अदर पर्सन इज नेगेटिव, तो यू मस्ट चेक इट आउट कि क्या चीज ज्यादा है। इफ यू आर सो पॉजिटिव तो उसकी नेगेटिविटी अपने आप ही पीछे हो जाएगी। आपका इम्पैक्ट उस पर ज्यादा है या आप अपना इम्पैक्ट उस पर ज्यादा डालेंगे। तो आपको इन चीजों में, छोटी मोटी बातों में नहीं पड़ना चाहिए। नेगेटिविटी इज ऑलवेज डियर। देखिए सड़क में हम चलते हैं, व्हेन वी आर वॉकिंग एंड तो देयर आर पेडल्स, देयर पत्थर भी होते हैं, बहुत कुछ चीजें होती है, तो बच के चलते हैं ना। ये तो है नहीं उनके ऊपर चलते हैं, कोई भी देयर यानी गंदगी पड़ी है तो हम अपना रास्ता बनाते हैं अच्छे ढंग से। तो इट इज सिमिलरली, देयर आर पीपल अराउंड यू, बट हाउ यू हैव टू वॉक, दैट इज योर टू सी। वो आपको देखना है, यू हैव टू मेक योर वे। उस नेगेटिविटी से अपने आप को बचाने के लिए बहुत बढ़िया रास्ता है, मेक ए रूम ऑफ इम्परफेक्शन इन योर लाइफ। जो भी कुछ हो रहा है ना, कोई कुछ कह रहा है तो उसको वो इग्नोर करो, डोंट टेक इट टू योर माइंड। हर चीज को थोड़ी ना हम स्टोर करेंगे, हम हर बात को, हर चीज को अपने साथ लेके चलते हैं। तो इसलिए हम अपने माइंड को क्या करते थे, कबाड़ बना, परेशान रहते हैं। ये सर लोग है ना। तो पॉजिटिविटी लाने के लिए सबसे पहले हमें नंबर वन, ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए। और अगर हम दूर नहीं रह सकते उनसे, तो हमें अपने माइंड को ये देना चाहिए कि
इनसे हमें उनकी बातें हम पर असर ना कर, आपको अपनी पॉजिटिविटी बढ़ानी चाहिए। एंड इफ यू आर पॉजिटिव तो एक चीज याद रखो, क्या कहेंगे लोग, सबसे बुरा क्योंकि वो आपको आगे आने से रोकता रहेगा। अब वो जैसा कहेंगे आप वैसे ही करते रहोगे, अपने आप को बदलते रहोगे, कब तक बदलोगे? यू चेंज योरसेल्फ, यू चेंज योर माइंड, यू कैन गो अहेड। My next question to you, ma'am, कि how can individuals develop greater self-awareness and use this to guide their personal and professional growth? शायद पर्सनल और प्रोफेशनल ग्रोथ के बारे में हमने अभी बात की थी, तो जो कैन यू रिपीट द क्वेश्चन? How can individuals develop greater self-awareness? सेल्फ अवेयरनेस की बात है। देखिए, सेल्फ अवेयरनेस सबसे पहले कब आती है? जब हमें अपनी वीकनेस और हमारी अपनी स्ट्रेंथ के बारे में पता होता है ना। मुझे ये देखना है, we should sit silently with ourselves every day for 10 to 20 minutes every day. That is called introspection, जिसे हम आत्मचिंतन कहते हैं। हमने कुछ भी किया है, अगर हम शाम को बैठते हैं, कभी भी बैठते हैं, we sit in silence and we look inside, तो हमें पता चलता है कि what are my weaknesses, what I did, what I'm getting, what I'm not getting। तो उससे आप अपने आप को जज करते हैं कि क्या गलती हुई, क्या नहीं, क्या करना चाहिए था, क्या नहीं करना चाहिए था। सो दैट इज कॉल्ड इंट्रोस्पेक्शन, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन। तो हमें अपने के साथ, आपके साथ जरूर बैठना चाहिए, अपने आप को देखना चाहिए, अपने भीतर झांकना चाहिए कि मैं क्या करूं, क्या नहीं है, तो आपको रास्ता मिल जाता है। सेल्फ अवेयरनेस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वही एक रास्ता है जो आपको बहुत दूर तक ले जाता है, क्योंकि लोगों की कही सुनी बातें आपको हो सकता है कि वो मिसगाइड भी कर दे, बट आप सबसे ज्यादा अपने आप को जानते हो। Who knows you better? Only we know that. है ना, we know। तो हमें अपनी वीकनेस और अपनी स्ट्रेंथ दोनों के बारे में बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, और अगर हमें पता होता है तो हम उस पर काम कर सकते हैं, क्योंकि स्ट्रेंथ टू इंक्रीज एंड वीकनेसेस टू ओवर। और हर इंसान देखिए पॉजिटिव और नेगेटिव होता है। इट इज़ नॉट कि मैं बोलूँ कोई भी इंसान में पॉजिटिविटी है कि सब में नेगेटिविटी, नो बडी इज टोटल नेगेटिव, नो बडी इज टोटल पॉजिटिव। तो अपने अंदर जो कमी है उनको एक्सेप्ट भी करो, वो सब में है, मेरे पे आई एम नेचुरल, इट्स नेचुरल। कई बार कॉम्प्लेक्स में भी आ जाते हैं, isn't it? ओ मैंने ऐसा क्यों कर दिया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो उसमें आके ना हम सेल्फ गिल्ट में फंस जाते हैं, फिर हम आगे नहीं उससे निकल पाते हैं, होता है ना। तो हम उसके बारे में सोचते ही रहते हैं, नो डोंट डू लाइक दिस, हो गया कोई बात नहीं, कम आउट। बस अपने आप को बाहर निकालना शुरू कर दो। और हम सेल्फ अवेयरनेस अपने अंदर, जब अरे कुछ गलत किया, इमीडिएटली हमें पता चल जाएगा, कोई बात नहीं, हमें रिएक्ट नहीं करना, रिस्पॉन्ड करना। कोई भी सिचुएशन है हम रिएक्ट कर जाते हैं, तो उसको देखना है, थोड़ा सा सोचना है, व्हाट इज राइट, रॉन्ग, हाउ शुड आई डू, हाउ शुड आई हो जाएगा। थोड़ा सा प्रयास करना पड़ेगा, थोड़ा सा अगर हम कोशिश करेंगे तो अपने साथ जरूर बैठें और उसके बारे में सोचें, देखें। ग्रेजुअली यू विल फाइंड दैट यस थिंग्स आर गोइंग माय वे, यू विल फाइंड योरसेल्फ स्ट्रांग मेंटली एज वेल एज इमोशनल। फिजिकली तो हम फिटनेस कर जाते हैं, जिम में जाते हैं तो फिजिक तो अपना बना लेते हैं, बट द प्रॉब्लम विद द स्टूडेंट्स इज they should make their mental and their emotional strength, that is very important। अगर उनका mental और emotional balance हो गया, they are the most important and the most powerful person, and they can create wonders in the world। And I think that is why the university launches courses like SEL, social and emotional learnings, yes, in which we are taught about the social and emotional learnings। That's very important, that's very important। देखिए लाइफ की जर्नी हेड टू हार्ट है, बस दिस द जर्नी हेड टू हार्ट एंड हार्ट टू हेड, पर यही कवर नहीं हो पाते, यहीं पर फंस जाते हैं। सारी प्रॉब्लम्स यहीं से शुरू होती है, यहाँ और यहाँ, कभी दिमाग में कभी दिल में। तो हमें सोचना चाहिए कि कहाँ दिमाग लगाना है, कहाँ दिल लगाना है। कुछ काम दिल से करना है, कुछ काम दिमाग से करना है। सो माइंड एंड हार्ट बोथ गो हैंड इन हैंड एंड बोथ शुड वर्क टुगेदर टू for a happy life, for a strong life, for a better life। When you talk about the introspection, basically, when a city like in Delhi, where there is everywhere a lot of chaos,
The people are running behind 9 to 5 jobs. The people are just It's a mad race. yes, the people are just running here and there every time. Yeah. Ma'am, what do you think that in this running and chaotic world, what do you think the role of the meditation? Very important. Role of meditation is very important because running will take you nowhere. You keep on running. It is a mad race. And suppose everybody wants to earn money. Okay, money will also not take you to the peace of mind. You won't get peace if with the money and with the luxuries of life. Money comes when you are at peace, isn't it? And meditation plays a very important role. It gives you inner strength. Today, in today's world, for either it is above 18, adult, young, old, for everyone, it is very important to meditate for 15 to 20 minutes. Because it is the time when you sit, when you rest, and when you get inner strength, and when you get some ideas also. When you can develop your insight. Otherwise, whatever we are getting, it is all about from outside world. And outside world is very attractive. And it attracts to us, and whatever it is, attractions are deceptive also. And it is very deceptive that what appears, it is not. It is not real. And we should see inside with our closed eyes, because real world is inside, what I believe. On you get power and you have the intuitions also, you have the gut feelings also, and with the power of inside mindset, you can really great strength. And that I can give you my example. That I meditate, and I am meditating for last so many years, and it has really helped me out. And I also advise my friends, my students, everyone that one must meditate according to their age, and it helps them. And you also start doing, if you do, it will really helpful for everyone. Help. And today's world, it is very important when it is so chaos everywhere. So just to take a rest, take a break, you must do meditation. You must sit with yourself. Not meditation, sit with yourself and just do nothing. Meditation is doing nothing. Simple sitting. Basically, there are a lot of हम लोग के आसपास में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये कहते हैं कि मेडिटेशन तो अंधेरे कमरे में करना चाहिए. बेसिकली मिथ्स अबाउट मेडिटेशन दैट अंधेरे कमरे में होना चाहिए, बिल्कुल शांत होना चाहिए. बट किसी का घर ऐसा है कि वो बहुत पास है रोड के या कोई ऐसी जगह पे वो रहते हैं जहाँ पे शांति को अनुभव कर पाना बहुत मुश्किल है. तो उनके लिए आप कैसे सजेस्ट करेंगे कि वो कैसे मेडिटेट करें? वो तो बिगनर्स है ना. देखिए, चाहिए वर्ड है मेरे लाइफ में चाहिए वर्ड नहीं है. और मैंने किसी ने बोला चाहिए वर्ड को अगर हम हटा देंगे, इफ देयर इज नो शुड, लाइफ विल बिकम इजी. रियली इट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग व्हाट आई फील. क्योंकि चाहिए तो बहुत कुछ होना चाहिए, अकॉर्डिंग टू दिस, अकॉर्डिंग टू मी, दिस शुड बी. बट इट इज जो है वो है. मुझे उसी में से अपनी लाइफ को लेना है. फ्रॉम वट एवर आई हैव टू डू मेडिटेशन एंड ऑल. और जैसे भी होते हैं, मेडिटेशन इज नथिंग. सबके देखिए अलग अलग एक्सपीरियंसेस होते हैं. एंड व्हाट आई सजेस्ट, मेडिटेशन में कहाँ बैठना है, अंधेरे में बैठना है, रोशनी में बैठना है, कहीं भी बैठिए आप, इट डजंट मैटर. आप भीड़ में भी बैठेंगे तो भी आप मेडिटेशन कर पाएंगे. इट इज जस्ट टू सिट एंड लुक इनसाइड एंड यू विल फाइंड पीस. फॉर दैट इन माई आई हैव डेवलप्ड अ चैनल एंड देयर आई हैव 10 minutes meditation for the beginners. So you can try that. And I would suggest that only you can play some music, or if you don't play any music, just sit. कहीं भी बैठ के अपने ध्यान से अपने ब्रेथ को देखना है, ऑब्जर्व करना है. कोई गाइडेड मेडिटेशंस आर अवेलेबल ऑन YouTube also. So you sit and start. Okay, wherever you find जो आपको शांति दे, जो आपको अच्छा लगे, बस वहाँ पर चले जाना चाहिए. एक राहत तो चुननी होती है ना. कहीं ना कहीं तो हमें ठहरना होता है ना. बिकॉज अब मार्केट में जाते हैं, इफ आई एम गोइंग टू बाय समथिंग एंड आई गो टू सो मेनी शॉप्स, सो मेनी ब्रांड्स, आई जस्ट लुक फॉर. बट एक जगह मुझे अच्छा लगता है तो वहाँ टिक जाते हैं, है ना. तो ऐसे इट इज ऑल्सो, देयर आर सो मेनी मेडिटेशन, सो मेनी लिंक्स, सो मेनी. बट वॉट एवर अपील्स यू, वेर एवर यू फाइंड सम रेस्ट और पीस, तो बस वहाँ क्लिक और रुक जाओ.
और फिर थोड़ा सा प्रैक्टिस करो, स्टार्ट करो. विंडो शॉपिंग मत करते रहो कि आज ये नहीं, कल ये नहीं. तो दैट वे यू वोंट फाइंड पीस एंड ऑल. बट डू इट. Many individuals these days basically, how can they basically overcome over self-doubt? Self-doubt and imposter syndrome. Basically, there is a syndrome which affects our which affects our basically doubts, that we think that we cannot do this, we cannot do that thing, because someone tells us that no, you are not capable of doing that. So we just think about no, I will not do that. So how can an individual basically overcome with the self-doubt and imposter syndrome and build greater self-confidence and self-esteem? There's the doubts are the main thing which stops you to go further, to do anything. Alright? So there are few doubts which are self-created. There are doubts which other person also create in you. Whether I should do this or not and all. So doubts, and we always doubt on certain good things. We never doubt on bad things. If someone says that he is bad, yeah, I'm not feeling well, okay, yes, I'm not feeling good. Here you doubt. I love you. If someone says I love you, here there you doubt. Isn't it? We always doubt on good things. We never doubt on the bad things. Something is happening. तो डाउट हमेशा अच्छी चीज़ों पे होता है, गलत चीज़ों पे कभी भी नहीं होता. तो कुछ knowledge helps a lot for this. So we must read some good knowledge books and all, and it is your inner which tells you that what is right, what is wrong. तो जिसके साथ आप हैं, जिसके पास आप हैं, जिसको आप अपना मानते हैं, कहीं ना कहीं हम किसी पर विश्वास करते हैं. जित में भी our teacher, this may be our professor, our parents, our friends and all. So wherever we have the full faith, so there you can go and discuss, and don't listen to each and everyone. Don't think yes, because there are so many things which misguide. बहुत चीज़ें आपको misguide कर रही हैं. तो जहाँ आपको सही लगता है, आपका जो inner जो मैंने बताया है, तो आप उसको सुनिए, अपने पेरेंट्स की सुनिए, अपने टीचर्स से डिस्कस कीजिए, कुछ नॉलेज बुक्स वगैरह पढ़िए, और ध्यान करते रहेंगे तो आपके अंदर अवेयरनेस इतना डेवलप हो जाएगा दैट यू विल स्टार्ट फीलिंग यस इट इज राइट. आपका दिल, आपका मन आपको खुद ही इस बात के लिए गाइड करते रहेगा. एंड दैट इज आई एम श्योर अबाउट इट. यू मस्ट डू इट. My next question to you, ma'am, that what role does mentorship and guidance play in personal growth, and how can individuals seek out and benefit from these resources? Very much. That's what I'm just telling you. That whenever we have doubt, whenever I have some problems, so where I feel to go? To our mentor. To our mentors. To our parents. Mentors play a very important role in building up our life. Okay, whatever I am today, whatever we are today, it is just because by the grace of them, by the help of them, our teachers are our mentors, our parents are our mentors. Anybody could be one who is helping out, shaping our mind, giving ideas and giving air to our thoughts. जो हमारे अंदर अच्छी अच्छी बातें पैदा करता है, जो हमें अच्छा जीना सिखाता है, जो हमें सही राह पर ले जाता है, वही हमारा मेंटर है. ओके, बट उसको संभालना, उसको सोचना. बुक्स आर ऑल्सो, बुक्स कैन बी आवर मेंटर्स. एनीबडी, जरूरी नहीं वो मेरे पास हो, दूर से भी हम किसी से कुछ भी इंस्पायर होते हैं, किसी से भी कुछ इंस्पिरेशन लेते हैं, दैट कुड बी आवर मेंटर. तो जहाँ से भी कुछ अच्छा मिले, कुछ भी अच्छा, वॉट एवर गुड वी कैन रिसीव फ्रॉम एनीवेयर, वी शुड टेक इट, वी शुड कीप इट, एंड वी मस्ट फॉलो इट इन आवर लाइफ. सो दैट हेल्प्स अ लॉट. दैट रियली बिल्ड्स. आपको मैं एक थोड़ा छोटी सी बात बताऊंगी. आई वंस अपॉन ए टाइम ए न्यूज़पेपर नवभारत टाइम्स, तो वो स्टोरी एकदा नाम से स्टोरीज आती थी. So I used to read those stories. Then I say that was my mentor. उसमें से मुझे बहुत सीखने को मिलता था. छोटी छोटी स्टोरीज होती थी, and small statements like giving is receiving. It's a simple statement, isn't it? But if you go, it has a deep meaning. It's deep meaning. कि जिंदगी में हम जो कुछ भी दे रहे हैं वही हमें वापस मिल रहा है. Small quotes from the great people, successful people,
they can also change your life. It plays definitely a big role. It's up to you whom you call your role model and anything. Ma'am, in a world like this, in today's world basically, where we see a lot of students are influenced by the wrong influencers. Through social medias, we can get to know about many influencers like this. Many people and many students from the very early beginning and the very early stages of their life, they are influenced by the wrong people basically, and they are guided towards the wrong things. So, what is your saying on that? That is, we should keep a check, and it is a very important thing. See, company makes a person, isn't it? Good company, bad company. And check is required by the parents also, check is required even a friend, and because a child is like a small plant, you can say small, so they don't know what is wrong and what is good for us. So anybody can misguide anyone, and they're swayed and they can spoil their own lives. So for that, we must be very careful. Because hey, social media say we get minus plus is always there. Okay. Because anything can be used for a good reason, anything can be used for a bad reason also. आजकल ऐसा होता है, everybody wants popularity and everybody wants to become famous and all, तो बड़े ढंग से अपने ढंग से वो सब अपने आप को चला रहे हैं और बहुत कुछ बच्चों को प्रभावित कर रहे हैं और उससे बच्चों में बहुत गलत असर भी आ रहा है. तो उसी रीज़न से उसके लिए हमें बहुत अवेयर रहने की ज़रूरत है. एंड वी मस्ट नो कि क्या हमारी को ज़रूरत है. सबसे पहले तो हमें अपने आप को देखना पड़ेगा. वी शुड चेक ourselves that what is our requirement, where I am going, whether it is good for me or not. So one check is from yourself, and then second check, if you have doubt whether it is right or wrong, you can ask your friends and all, you can take advice from them. And third, you can ask your parents and your teachers. And somewhere हम आजकल अपने parents को तो कुछ ज़्यादा वैल्यू नहीं देते. हम सोचते हैं चलो कोई नहीं, अब उनका ज़माना और था, हमारा ज़माना और है, वो कुछ जानते ही नहीं है. तो इस सूरत में हम ज़्यादा से ज़्यादा मीडिया पर हम बहुत विश्वास करने लगे हैं आजकल. तो अपने टीचर्स हैं उनसे पूछ सकते हैं, और कहीं ना कहीं हम किसी को तो विश्वास में लेना ही पड़ेगा. नहीं तो फिर वाली बात है, एक कदम उठाया था गलत राहे शौक में, जिंदगी तमाम उम्र मुझे ढूंढती रही. मतलब हम शौक में अगर एक भी कदम गलत उठा लेते हैं तो फिर जिंदगी फिर हमें नहीं मिलती. तो इसलिए बहुत फ्रॉम द वेरी बिगनिंग जब हमें लगता है कि हम कहीं भी बिखरने वाले हैं या टूटने वाले हैं, तो कोई ना कोई किसी ना किसी को, हम जैसे हमने खुद को संभाला, तो इसीलिए मुझे लगता है कि इन बच्चों को मुझे लगता है कि आई शुड गिव देम दैट यस चूज राइट पाथ, बिकॉज देयर इज नो कमिंग बैक. ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है. मैम, एनी एडवाइस ऑन the generation gap, basically what this generation talks about, that our parents and our students are basically a generation gap between them. Generation gap के लिए advice, because generation gap is there and it will remain always, है ना. जब हमारे टाइम में हम अपने पेरेंट्स को देखते हैं तो there was a generation gap. Today's children, today's parents, there is a gap, and tomorrow अगर उनके बच्चे फिर there will be a generation gap, because it is always there. आप इसको तो ब्रिज कर ही नहीं सकते. You cannot bridge this gap. But what we can do, we can just understand. हम इसको अपने बहुत ही इमोशनल उस पर हम अपने आप को वहाँ रख के सोचें. तो we can just understand that if I am there, my parents उस एज के हैं और मेरे पेरेंट्स they were not educated like my mother and parents, और मैं आज उनके हिसाब से I am really educated, और मैं अगर आज के बच्चों को देखता हूँ उनके हिसाब से हम कुछ भी नहीं है. At about like 60% was considered 90% and all equal to that. Today 90% is also, तो इस तरह से क्या कि हर एज की अलग अलग रिक्वायरमेंट्स हैं, हर एज की अलग अलग ज़रूरतें कह सकते हो, अलग अलग तरह से वो जिए हैं. बट डू यू थिंक दैट आवर forefathers were happier than us? For sure, ma'am. They were more happier than, उनके पास तो कुछ भी नहीं था, है ना. तो हमें ये देखना होगा, उनके पास बहुत कुछ है जो जिन सब सीख सकते हैं, लेकिन हम कभी उनको मौका ही नहीं देते हैं. देते हैं आजकल के बच्चे देते हैं. वन स्टूडेंट गिफ्टेड ए वॉच टू द फादर. फादर सेड घड़ी तो दे दी बेटा, कभी टाइम भी दे दिया, है ना.
तो बच्चों के पास टाइम नहीं होता अपने पेरेंट्स के लिए, है ना, तो वो गैप बना रहता है क्योंकि वो उनकी ज़रूरतें भी अलग है। फिर जब उनको रियलाइज होती है, ओह यस, धीरे धीरे ग्रेजुअली विद द पैसेज ऑफ टाइम दे रियलाइज कि माई फादर इन वॉज राइट। बट एक टाइम आता है ज़रूर, वो गैप जब दूर होता है, लेकिन जब वो खुद उस स्टेज पे पहुँचते हैं, तो इसके लिए हमें जो ये फैमिलीज़ में एक टुगेदरनेस की ज़रूरत है। पेरेंट्स को भी ये समझना होगा, इट इज़ नॉट ओनली द young generation, older generation should also think that yes, it is the need of the hour. तो उस तरह से अगर आप एक दूसरे को समझेंगे तो गैप जरूर दूर हो जाएगा और हम आपस में साथ में बैठ सकते हैं, मिल सकते हैं, और मिल के चलेंगे तो बहुत आगे तक चले जाएंगे। That's really we must understand that हमें अपने बुजुर्गों से, अपने पेरेंट्स को साथ में लेना, उनको भी समझना चाहिए ये यंग जनरेशन है, इनकी इसी तरह की हैबिट्स हैं, उनको अडॉप्ट करते हुए आगे चलना है। पेशेंट के साथ एक दूसरे को समझते हुए वी कैन रियली गो फॉरवर्ड एंड वी कैन बिल्ड अप ए स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप। Ma'am, my next question to you, ma'am, that what are the some effective ways for individuals to develop their communication and interpersonal skills? Communications and interpersonal skills. Yes, for that, when you want to develop your communication skills and all, so for that reason, you must do practice and your studies and everything. And when you do practice, suppose आपको लगता है कि आपके अंदर क्या कमियां हैं, किस तरह से कम्युनिकेशन स्किल में क्या प्रॉब्लम आती है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम इसमें मुझे लगता है कि कॉन्फिडेंस की कमी होती है, एक फ्लुएंसी की कमी होती है। हम दूसरे को देख के कंपेयर करते हैं कि ही इज जैसे ही इज मोर स्मार्ट, ही इज स्पीकिंग सो वेल, ही इज सो फ्लुएंट एंड ऑल, एंड आई डोंट हैव दैट स्किल, आई कैन नॉट डू इट। तो स्टॉप दैट कंपैरिजन और आप खुद प्रैक्टिस कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक डीलिंग्स करेंगे, अगर ज़्यादा से मौका अपने आप को देंगे बोलने का, और तो कॉन्फिडेंस आएगा। और कॉन्फिडेंस के लिए आपको सब्जेक्ट पे मास्टरी भी चाहिए। When you have mastery over any subject, you can speak out, you can gain more confidence. You speak with confidence. And when you don't know, then you don't have that confidence. Second thing, when you don't get any chance anywhere. So for that, you should create that atmosphere. You can talk to your friends, you can talk to your teachers and all. Create an environment and develop that kind of skill. By talking to yourself, by talking to your mates and all on phone and everything, that you have to do. And one day, if you continuously practicing, you can do it. You can really develop your communication skill with the promise to yourself that yes, you can do it. First of all, you should have a positive mind. You should not develop any kind of complex that no, I cannot do. As many students do, यार ये बहुत difficult है, ये नहीं होगा, ये कैसे होगा। तो ways are out. You can find ways for everything. Right? Yes, sir. And basically this is a question of a small village boy who comes to a very big city for higher studies. So he faced a lot of problems in the beginning basically. Okay. So according to you, ma'am, how can an individual develop greater adaptability and flexibility in the face of a change and uncertainty? In the face of change and uncertainty. Yes. From a village, a person is coming to a city and all. Obviously, for him, everything is changed. A totally different world, isn't it? And so there are two things. When he has confidence, so he can set himself within that environment and all. And if he finds himself that if he develops the complex that I cannot do it, I am from a small village and all, so that he will take longer time. तब वो नहीं कर पाएगा। तो फॉर दैट रीजन उसको अपने माइंड में ये चीज़ सबसे पहले डेवलप करना है। नाउ आई एम हियर, अपने अंदर से कॉम्प्लेक्स तो दूर करना पड़ेगा। आई एम फ्रॉम द विलेज एंड ऑल, नो प्रॉब्लम। इफ आई एम फ्रॉम ए विलेज, इफ आई एम फ्रॉम ए स्मॉल टाउन एंड ऑल, सो व्हाट? नंबर वन, सो व्हाट? Isn't it? Now I am here because I am qualified. Now I can do it. I have a big purpose before me. You have to boost your own morale. You have to boost your own self-confidence.
You have to sit with the friends, with a person where you can get the confidence, where you can learn. You know, learning is very important. Everybody, if one practices, so gradually one can learn and one can gain the perfection. It never comes easily. Okay? So from where you have come, from any background you are there, never ever develop any kind of inferior complex that you are from that. Okay? I am also from that, from the town where it was very small. I am not from a very English spoken school and English medium schools and all. But practice, I did practice. You see that everybody practices. Everybody, if you ask any successful, read out the stories of successful people and see the challenges they have faced in their lives. Don't forget about Abraham Lincoln. He was from a poor farmer's family, isn't it? He had no pen, no paper to write on and everything. But he had a dream of White House in his mind. He has a dream. And he became president because of his confidence. He has that confidence, yes, he can do it. So no matter, adversities and poverty never matters, the small township, no, it doesn't matter. You can achieve everything. You know Abraham Lincoln, Abdul Kalam Sahab, missile man. You know his background. He was from a township, he was small town, and he was also from a poor family, and he became president one day, and he's a missile man, and he loves students, children. He has so many messages to the students. One day you can also become one of like them. So always read. Whenever you feel your energy level is low, your mind is getting low, so read the stories of successful people. That will help you out. That will give you courage to fight against every problem of the life. Learn to face challenges of life. Challenges will come. वो आते रहेंगे. Have you seen a river? When a river, जब एक river बहती है, तो what happens? On the way there are small stones, there are big mountains, big stones and all. So पानी रुकता है कहीं? पानी ये तो नहीं कहता पत्थर को हटाओ. वो उसके ऊपर से या साइड से या ऊपर से बहता है. जितना बड़ा पत्थर उसके ऊपर से बहेगा. तो the force, recall the force, जिस force के साथ चल रहे हैं, जिस force के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं, उसी force से आपका रास्ता बढ़ता चला जाएगा. अगर पानी में गति ही नहीं है, there is no, तो वो तो अगर उसके अंदर फ्लो ही नहीं है, तो वो वहीं पे रुक जाएगा. So similarly, if I have the thoughts, if I have force in my thoughts, if I have something to do, some power, या will power, मुझे ये करना है, मुझे आगे बढ़ना है, nobody can stop you. Nobody can stop you. तो अपने अंदर किसी भी ऐसे विचार को ना लाएं जो आपको छोटा बनाता है, जो आपकी कॉन्फिडेंस को खत्म करता है, जो आपके अंदर के चैलेंज को रोकता है. कभी भी अपने आप को कंपेयर नहीं करें किसी से भी. You are one of the biggest and one of the very best creation of the God. ईश्वर ने आपको बहुत सारी प्रतिभाओं से नवाजा है, प्रतिभाएं दी हैं. You are the most creative person. पर उनको आपको बाहर लाना है. And you can do it by practice, by efforts. When you talked about staying high, basically, if you feel low, then you studies about the successful people's stories and many more things. But ma'am, in this generation, as we are seeing, many people are driven towards bad addictions and taking alcohols, consuming alcohols and all. So, anything on that, ma'am? Yes, that is a escape. They think that yes, they are taking alcohol and they are so they are away from the tensions, but they are inviting more tensions. They are inviting bigger problems, isn't it? Yes, sir. Isn't it? So वो थोड़ी देर का होता है, थोड़ी देर का उनको लगता है कि हाँ मिला, थोड़ी देर मजा आया, पर क्या है, it is a थोड़ी देर का सुख है, लेकिन जिंदगी भर का दुख है. So there is no pleasure, it is painful, very painful. वही मैंने बताया था कि एक कदम उठाया था गलत राहे शौक में, जिंदगी तमाम उम्र मुझे ढूंढती रही.
एक भी अगर आप इस राह पे अगर चले जाते हैं, ये राह शुरू में बहुत अच्छी लगेगी, बहुत प्यारी लगेगी, क्योंकि गलत राह पे हम बहुत जल्दी चले जाते हैं और हमें बहुत मज़ा भी आता है, क्योंकि उसमें कुछ करना ही नहीं पड़ता ना। लाइफ में देखिए, व्हेन यू वांट टू गो अप देन यू एंजॉय फॉर सम, फिर उसके बाद आपको थकने आप नहीं चढ़ पाते, धीरे धीरे बहुत मुश्किल लगती है। उतरने में कितनी आसानी है, गिरना तो बहुत आसान है, लेकिन जब आप चढ़ रही है शुरू में तो थोड़ा सा जोश होता है, फिर धीरे 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 आप रुकते रहते हैं। सो दिस इज द लाइफ, व्हेन यू वांट टू गो अप, तो यू नीड हार्ड वर्क, यू नीड पेशेंस, यू नीड सो मेनी प्रैक्टिसेस इन ऑल लाइफ में। व्हेन यू फील ऑन द वे कि नो इट्स टायर्डिंग, इट इज वेरी डिफिकल्ट, so then you start taking ways of some this drugs and everything, and there are people who really want कि आप इसको लेना बर्बाद करें खुद को, कुछ जानबूझकर भी। आजकल मैंने देखा यूनिवर्सिटीज में लोगों बच्चों को गलत यहाँ पे ले जाते हैं ताकि they don't want that they should grow up, you know. So we must be aware, we must be very confident कि yes, ये हमें नहीं करना है, अपने आप के साथ लड़ना है। और हमें सबको एज ए टीचर्स, एज ए लीडर, आई थिंक यू आर ए गुड लीडर एंड वी मस्ट स्टैंड विथ सॉलिडेरिटी, नो इट इज रॉन्ग, क्योंकि एक बार ये शौक अगर लत पड़ जाती है ना तो फिर मुश्किल होता है छुड़ाना। तो हमें इसके लिए काम करना है, और वट एवर एज ए वी शुड टेक ए प्लेज, वी शुड रियली टेक ए प्लेज। जो भी ऐसा कर रहे हैं, जो भी इस चीज़ को यहाँ तक ला रहे हैं, जो भी इसको टेस्ट करवा रहे हैं, तो हमें उनको भी रोकना है। और एज ए स्टूडेंट हमें सबको एक चीज़ बतानी है कि आवर पर्पसेस शुड बी हाई, आवर गोल्स आर हाई, एंड वी शुड अचीव समथिंग ग्रेट इन आवर लाइफ, एंड टू रीच देयर, टू अचीव दैट टारगेट, वी मस्ट फाइट एंड वी मस्ट नॉट फॉल इनटू ऑल दिस स्मॉल फैक्ट्स एंड रॉन्ग पाथ। Okay. Yes, sir. Hope it will help you out. It's not about me, ma'am, basically. No, I mean all students. Yes, ma'am. I'm not talking about you. You means the students. I'm here talking about the students, those who are taking these kind of ways for just short pleasure. Yes, sir. It's called short-term pleasure, long-term pain. For sure, ma'am. So. Ma'am, what we came to know about from them, ma'am, who consume this type of things and do this type of thing, basically, that they have faced some kind of failures in their times, or some kind of there is some kind of pain in their life, basically. Of course. So, ma'am, my next, how an individual basically develop greater emotional intelligence and use their failures and setbacks as opportunity for growing. That I told you earlier also, that failures are a one step towards success. You must have read it. Failures doesn't mean that everything has come to an end. And generally, as students, today's students, they give up and they surrender to the failures. And they think that up to nahi hoga, it is not possible. So they choose many wrong ways. They even commit suicide also. I know many students that when they don't get marks, they commit suicide. And they leave their studies and they just go again. Whatever. But this is wrong. This is very wrong. So they should understand. They should fight. They should understand the value of life. Why God has given us life. Life is so precious. Life is to make. Life is not to give up. Never give up. This is my message to all the students, that they must face it boldly. They must understand that every time, everywhere, you are not going to win. At a point of time, you will face some kind of defeat also. So be ready for that. Be ready for that. It's chance and choice. I want to become IAS. I become a teacher. It was written. It was not by choice. It was by chance. If one wants to become doctor, one become engineer. So what? Means if you want to become someone or something in your life, and you are not getting that, just think that, oh, it's not in my destiny. No problem. You must have always two options in life. I always say two options. Okay? If one is not working, so go for second one.
but never give up. Because life you can start life from anywhere. Anywhere you can start. Never give up. I'm against all this thing. And my fight is also this thing that why one gives up. Why? You should understand that this life is for you to live, to enjoy, to get whatever we have, whatever we can get by our efforts. Sometimes they come under pressure of their parents, teachers. The pressure is also there. Co-pressure भी है, and then they see कि उसको अच्छे number मिल गए, and he got admission, मुझे नहीं मिला, and I want this and that. So comparison, parents को भी नहीं करना चाहिए. Parents should never compare. Teachers also not compare, because every student is unique. They are having unique qualities, isn't it? Yes, sir. So we must give respect to that, and everybody should have respect to this body, to this birth, to this life, and must continue with whatever is God given, because destiny also plays some role. जिंदगी उन्हें नहीं मिलती जो किस्मत के मारे हैं, है जिंदगी उनकी भी मौत जो किस्मत के सहारे हैं. बहुत लोग सोचते हैं किस्मत में होगा तो मिल जाएगा, वो भी गलत है. कुछ लोग कहते हैं किस्मत की, मतलब दोनों बातें हैं, लक एंड चांस, और डेस्टिनी और एफर्ट्स. आपका प्रयास बहुत मैटर करता है, और अगर आप कर रहे नहीं मिला तो कोई बात नहीं ना, शुरू करो लाइफ को. अभी जब तक आप कहीं नहीं पहुंचते हो तो आप चेंज कर सकते हो, आप आगे पहुंच सकते हो. यू कैन स्टार्ट योर लाइफ. ये बात तो सबको, सारे बच्चों के लिए है कि लाइफ में कभी भी तुम्हें ऐसा लगे कि अब नहीं हो रहा है या कभी भी, तो गिव अप कभी नहीं करना. कुछ नहीं मिला कोई बात नहीं, और मिलेगा, जरूर मिलेगा. एक दिन जरूर तुम्हारा होगा. वन डे विल बी योर्स. हैव दिस फेथ इन योर माइंड, हैव दिस फेथ इन योर लाइफ. You will get one day. One thing that we are seeing these days basically is relationships. Many students fall in relationships kind of thing. It's the age. Some are good for them and some are bad for them. Some are drive them towards the bad things and some drive them towards the good things. So basically parents and children are basically this gap is like कि वो नहीं समझेंगे, पेरेंट्स को नहीं बताना चाहिए, एंड दिस थिंग्स वी गेट फ्रॉम आवर बेसिकली आवर फ्रेंड सर्कल. दैट नहीं उनसे कैसे बोल सकते हो तुम ये चीज. तो मैम आपका इस पे क्या सोचना है? मेरा ये सोचना है इट इज पार्ट ऑफ लाइफ. सबसे पहले तो वी शुड एक्सेप्ट दिस इज एन एज, एंड वी मस्ट नॉट थिंक कि ये बैड नहीं है. ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि वी आर डूइंग समथिंग रॉन्ग और ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए. रिलेशनशिप पार्टनर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन अवर लाइफ, एंड माइंडसेट के साथ अगर आपको विद द सेम माइंडसेट विद योर लाइकिंग एंड ऑल, इफ यू गेट समवन, इफ यू आर फीलिंग गुड, ओके, सो देयर इज nothing to hide about it. Okay, but it should not be time pass. For many students, okay यार चलो टाइम पास करते हैं, ये सब है, तो कोई भी चीज मजाक में नहीं लेनी चाहिए. उससे आप अपनी लाइफ को भी खराब कर रहे हो, दूसरे की लाइफ भी खराब कर रहे हो, क्योंकि जो इमोशनल सेटबैक्स होते हैं उनसे उभर के आना बहुत मुश्किल होता है. देखिए लॉस ऑफ मनी है, लॉस ऑफ एनीथिंग कैन बी, सह सकते हो उसको आप संभाल सकते हो, लेकिन जब इमोशनल ब्रेकअप होता है तो उससे उठना, उससे उभरना बहुत मुश्किल होता है. यू मस्ट अंडरस्टैंड दिस थिंग, है ना. तो यहाँ पर थोड़ा सा यंगस्टर्स को समझना चाहिए कि पेरेंट्स को भी समझा सकते हैं. आजकल के पेरेंट्स भी मेरे को लगता है कि इट इज नॉट सो, दे आर ओपन एंड ऑल, बट फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड बी क्लियर कि वेदर दिस रिलेशनशिप इज गोइंग टू वर्क फॉर लॉन्ग और नॉट. पहले आप अपने आप से श्योर हो जाइए और फिर आप आगे बढ़ सकते हैं. सोचना समझना आपको पड़ेगा. कई बार आपको नहीं लगता तो इट इज अ बिग रिस्क ऑल्सो, है ना. इट इज अ लाइफ, देयर इज नो चॉइस, है ना. तो लाइफ का मेन पर्पस क्या है कि आपको बिना स्ट्रेस के अच्छे से जीना है. और आप अपने बारे में सबसे ज्यादा कौन जानता है? आप जानते हैं. यू नो योर चॉइस, यू नो योर टैलेंट, यू नो योर लाइकिंग, यू नो कि आपको क्या चाहिए, कैसा चाहिए लाइफ में. तो ये तो रहेगा. और कई बार पेरेंट्स मान जाते हैं, कई बार नहीं मानते हैं. आपको भी पता आपके पेरेंट्स कैसे हैं, क्या हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है. आप उनको समझा सकते हो, वो समझ जाएंगे. ये मेरा मानना है, पेरेंट्स समझ जाएंगे
and they don't want to lose you. They don't want to lose you, and you should know how to convince them. If you are convinced, first of all, you must convince yourself. इस तरह से चलना चाहिए शुरू से ही. You should go in the right direction. अच्छा लगता. And the last one of this podcast basically that how can college students use their experiences and education to make a positive impact on the world and in the future? You have a great responsibility on your shoulders. You have really a great responsibility. You should have big goals in your life. Big goals that I have to do something for my family. Okay, number one is family. Then you must do something for the community, and then you must do something for your nation. And then nation, and then of course for the world. So if you have such kind of goal, if you are doing for that, so you can really create wonders in your life. So you must work hard, you must plan for that. And everybody has some good on something or something on another thing. So you must check out what can you do, how you can contribute to the society. And with that goal, if we proceed, if we go, and plan, and with the help of our teachers, our professors, or our directors, or whatever, friends, parents and all, so we can definitely create a lot of impact on others also, on society also, because basically we are the builders of the nation, future generation, we are the makers of the world, okay, with a greater responsibility, greater success is required, greater work is required, and we must be ready for that. And for that, you should win yourself. We should win over your shortcomings. We should win over your problems. We should face your challenges. We should win all your weaknesses and gather strength. And how can you gather strength? So many things I have told you. That check yourself, check your mind, meditate, and take good company, discuss your problems, never hesitate, because if I am happy, if I am cool, only then I can spread happiness. I can give something to others. If I am myself is in stress, if I am upset, if I am not happy, if I am broken, how can I do something for others? No, isn't it? So first of all, I should make myself strong. I should understand that if people are saying anything, let them. Because many people, those who do nothing, they only criticize. Yes. Isn't it? Yes. And they have no time except only criticizing. So don't bother what they're saying. Okay? But leaders, those who work, they have greater responsibility. And they are most powerful also. Isn't it? Yes. So when you do, when you are doing, and when you go with a purpose in your life, then you will see, yes, there is a long, long way to go. And you can achieve it. You can achieve the target. And you can really become a torchlight for others. You can start, because one light, you can enlighten so many people. आप अपने साथ एक इंजन होता है, उसके साथ पीछे बहुत सारे डब्बे होते हैं, है ना? तो be an engine, and journey of 1,000 miles always begin with one step. बस एक कदम आगे उठाना होता है, आपके पीछे पीछे सब चलने लगेंगे. तो वो ताकत, तो लीडर हर कोई नहीं हो सकता. But we should develop leaders. For this, we should make those who consider, yes, कि कुछ देना है, हमें समाज को कुछ देना है, दुनिया को कुछ देना है, कुछ करना है, अच्छा आइडिया है, तो make a team of such people, okay? And you start your journey, and you will definitely reach to the goal, and the world will be proud of you, nation will be having a great words, and you will feel yourself that yes, you have done something. अपने लिए सब जीते हैं ना, दूसरों के लिए भी जीते. और those beautiful lines are, मधुबन खुशबू देता है, सागर सावन देता है, सूरज न बन पाए तो बन के दीपक चलता चले, फूल मिले या अंगारे तो सच की राहों पे बढ़ता चले. तो हमारे अंदर अगर ये थॉट्स अच्छे से आ जाएं, हम इनको अपनी ज़िंदगी बना लें, अपने आप के साथ इम्बाइब कर लें, और ये सोचें कि मुझे दुनिया को देना है, बहुत कुछ देना है. तो एक दिया भी बहुत रोशनी दे देता है, और एक दिए से बहुत सारे दिए, बहुत सारी रोशनी हो जाती है. So, with that purpose, with that motto, if I start my journey, definitely one day will be yours.
एंड मैं अकेला ही चला था, जानी बे मंजिल मगर लोग जुड़ते गए और कारवां बनता है. So with that, I wish you all the best to everyone, and I really want that I bless all of you to gather strength, to gather energy. Never feel weak. Whenever you feel weak, just meditate and gain energy. As एक मोबाइल है, if you have a मोबाइल, तो मोबाइल में कितना ही महंगा मोबाइल है, उसको क्या करना पड़ता है? अगर वो चार्ज नहीं है तो फिर किस काम करेंगे? बेकार है ना. इसीलिए ये जो बॉडी है ना, दिस बॉडी इज ए ब्यूटीफुल गिफ्ट ऑफ गॉड. इट ऑल्सो नीड चार्जिंग, है ना? चार्जिंग. एंड हाउ डू वी चार्ज इट? बाय डूइंग सम मेडिटेशन, बाय डूइंग सम योगा एंड ऑल. So keeping fit ourselves mentally and emotionally and physically as well. So if you do it, we remain charged. As we charge our mobile, one should keep oneself charged. चार्ज रखेंगे अपने आप को, बहुत कुछ कर पाएंगे और बहुत आगे आप लोग पहुंच सकते हैं, पहुंचेंगे. So that's all the time we have for today's episode of Win Yourself to Win the World, brought to you by Amita under the Aegis of G20 Summit. We hope you find this episode insightful and thought-provoking, and that it has inspired you to take action towards your personal growth and development. Remember, winning yourself is not just about achieving personal success, but also about making a positive impact in the world around you. We encourage you to continue seeking knowledge, learning new skills, and pushing yourself towards the best version of yourself. We want to extend our sincere thanks to our speaker guest, ma'am, for sharing her valuable insights and experiences with us, and to our listeners for tuning in. You can watch more videos of Sadhana ma'am on her YouTube channel, Sadhana Agarwal-lifetime coach. Link is in the description. Please subscribe to our podcast and share with your friends and colleagues if you find it useful and insightful. Join us again next time as we continue to explore the different themes in the context of G20 Summit. Until then, keep striving towards your goals and making a difference in the world. Thank you for listening. Thank you. Thank you so much. Thank you.